Assalamu alaikum to all our viewers. Welcome back. We are here at the MTA Canada studio at the Jalsa in Bradford, Ontario. We are honored to have National Ameer Sahib as our special guest, Lal Khan Malik Sahib, and with him we have Rizwan Mia Sahib, who is the Afsar Jalsa Salana. Assalamu alaikum to both of our guests. Wa rahmatullahi wa barakatuh. So Ameer Sahib, I will start with you. I wanted to ask you, we're very fortunate that after 2 long years, we're finally having another Jalsa Salana. And you've been experiencing for the last few days the setup, the volunteers. What are your sentiments and thoughts? First of all, it is after 3 long years, not 2, because of the pandemic. And our first impression is Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. We are so fortunate that Allah has been kind and we are now able to have our Jalsa Salana again. And the second excitement is that it is the first time that we are in Hadika Ahmad, the property which was purchased for the primary purpose of being our Jalsa. But due to various reasons, we have not yet been able to use this property for Jalsa, and this is the first time that we are having the Jalsa on our own property. जज़ाकमुल्लाह हमारे उर्दू नाज़रीन के लिए मैं ये सवाल करूँगा रिज़वान मियाँ साहब से। रिज़वान साहब, हम पहली दफ़ा यहाँ पे जलसा मुनक़्क़द कर रहे हैं, जैसा अभी अमीर साहब ने भी फरमाया। मेरा आपसे ये सवाल है कि ये प्रॉपर्टी के बारे में अगर हमें कुछ बताएं कि ये प्रॉपर्टी कब ख़रीदी गई, इसका नाम किसने तजवीज़ किया, इसके अलावा यहाँ पे जलसा मुनक़्क़द करने की क्या वजह? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बड़ा ख़ूबसूरत सवाल है। ये जो ज़मीन है ये हज़ूर अनवर के इरशाद पर 2007 में और फिर 2008 में ये 2 पार्सल हैं। एक 200 एकड़ का है और एक 47 एकड़ का है। जो इस वक्त जलसा हो रहा है ये 47 एकड़ जगह है। हज़ूर अनवर के इरशाद पे ख़रीदी गई थी। हज़ूर अनवर ने इस जगह का नाम हदीक़ा अहमद तजवीज़ फरमाया था। और जलसा करने की वजह यह है कि हज़ूर अनवर ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था 2016 में कि अगर मुझे बुलाना है तो फिर बड़ी जगह पे जलसा करें। तो तब से यही ख्वाहिश थी। फिर 2017 में जब अमीर साहब की तरफ से ये ज़िम्मेदारी मिली तो अमीर साहब की तरफ से पहला इरशाद यही था कि हज़ूर अनवर का जो इरशाद है इस पर हम काम करना है। इस पे काम होता रहा 3-4 साल, काफ़ी इसके मराहिल थे, लेकिन अब खुदा के फ़ज़ल से हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि एक छोटे पैमाने पर हमें ये जलसा मुनक़्क़द करने की तौफ़ीक मिल रही है। Jazakallah. Amir Sahib, related to a very similar question, many of us we were used to having Jalsa Salana in Mississauga at the International Center. I think we have almost a whole generation of children that have grown up with that that venue as the Jalsa Salana. So I know a lot of people are wondering what is the future plan, how was it decided to change the venue, and what can we look forward to in the future now? You are very right. International Center has become synonymous with Jalsa Salana Canada, and we have been having that facility for a very long time. It was natural for the members of the Jamaat to think that Jalsa would always be held in International Center. The last time we had the Jalsa in International Center, where Sayyidina Hazrat Khalifatul Masih Ayyadul Ta'ala bin Asl Aziz graced our Jalsa Salana, Huzur said that if you want to invite me next, you have to have a big enough space. So it was a clear guidance that we have to go outside because we had reached the limits of International Center and there was no way that we could accommodate a larger number. Before our inside capacity was exhausted, our parking was already a problem there. So now we had to go to a bigger venue, and since this property was purchased for this very purpose, we started interacting with the town of Bradford that we can have the Jalsa Salana here. There were certain problems. These are being resolved, and this year we are lucky and we are thankful to the town of Bradford that they have given us the permission to hold the Jalsa on a smaller scale. This would give us the experience of holding the Jalsa Salana in open
open to the elements, except that by grace of Allah we have had the air conditioning facility. But still, if there is rain, there are certain other aspects which we have to cater for. Those who have been attending Jalsa Salana in Islamabad, Tilford, and then in Hadikatul Mahdi, they know what a Jalsa Salana in open sometimes entails. So we are all having a view to that, but our plan is that according to the instructions of Sayyidina Hazrat Qiblatul Masih, we are preparing these grounds so that we can have our normal Jalsa Salana for all the near future years in our property, inshallah. जज़ाकुमुल्लाह अमीर साहब। रिजवान साहब ये बताएं कि अब जिस तरह अभी अमीर साहब ने भी जिक्र किया कि पहली दफ़ा यहाँ पे हमने अपनी प्रॉपर्टी पे जलसा किया है और इतना आसान नहीं था कोविड के बाद इतने बड़े पैमाने पे जलसा करना और इतने बड़े इंतज़ामात को साथ लेकर चलना। ये बताएं कि यहाँ पे चूँकि आपने जैसे कि पहले भी जिक्र किया है कि बाद दूसरे मसाइल भी थे, सिटी से इजाज़तें लेना और परमिट्स वगैरह, तो ये बताएं कि जलसा के सेटअप के लिए आपको किन किन मराहिल में से गुजरना पड़ा? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इंटरनेशनल सेंटर में हम जाते थे, बुकिंग करते थे, 2 दिन में सेटअप करते थे, जलसा करते थे, आधे दिन में बाहर आ जाते थे। यहाँ पे हमें 4 महीने पहले जब अमीर साहब की तरफ से हमें हदायत मिली है तो सिटी के साथ कोऑर्डिनेशन करके जो इवेंट परमिट है उसके लिए कोशिश की गई। उसके बहुत सारे मसाइल हैं, बड़े मराहिल थे, लेकिन चूँकि हम तो खुदा ताला के फ़ज़लों का ज़िक्र करते हैं, मुश्किलों का नहीं करते, वो हमारा काम है, हमने उनको देखना है। लेकिन खुदा ताला के इतने फ़ज़ल हुए हैं कि जिस तरह कल वॉलंटियर की मीटिंग में भी मैंने इसका इजहार किया था कि हज़रत साहब का एक ख़त था जिसमें हज़रत साहब का ये इरशाद था कि अल्लाह ताला आपकी इस्तात बड़ा है। तो मैंने इसको रोज़ाना देखा है कि ऐसे लोग आए हैं जिनको जानते भी नहीं थे कि ये कैसे काम हो सकता है, और काम होते चले गए हैं। और वो जो कहते हैं ना कि फ़रिश्तों का नज़ूल, तो वो डेफ़िनेटली खिलाफत की बरकत से हमने देखा है। मुमकिन नहीं था कि इतने थोड़े वक्त में ये सारे काम किए सकते। थोड़ा सा पैमाना है, लेकिन काम वही है, चाहे 20,000 का करना हो, चाहे 5,000 का करना हो, लेकिन खुदा ताला के बड़े फ़ज़ल हुए हैं। तो जब हम फ़ज़लों का ज़िक्र करते हैं तो फिर शुक्र अदा करते हैं, खुदा ताला और देता है फिर। तो इंशाअल्लाह ताला अगले साल और ज़्यादा बड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। So Ameer Sahib, you mentioned that Hazur Anwar Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz had a desire for a bigger venue, and that his desire was that the next time he visits, it should be at a bigger venue. So the Jalsa, we've started practicing from this year. So there's a common question that many people were wondering, which is that because we were wanting to do a Jalsa on a bigger scale, and also because of Jalsa not happening for so many years, I think many people were looking forward to coming. But we noticed this is a very unique Jalsa, that there are limitations, that each day a member can only attend one day, and then the Lajnar set up in Tahir Hall in Peace Village. I wanted to ask you if you could give some background as to the setup of this year, if it's unique, and what we can expect in future years. Right. This property is about 247 acres. This 47 acre is the very place where we are holding the Jalsa at a smaller scale. 100 acre of the property is wooded land. We can use it, but not for Jalsa Gah, for some other purposes like Langar Khana or some other services. 100 acre land is comparatively level, and that is being prepared as our permanent Jalsa Gah for as long as Allah would like us to do. And this year, the regular Jalsa Gah land is not yet ready. For it to be ready, it has to be leveled properly, it has to be grassed, and certain roads have to be built. And for this, we are working with the city, and we are progressing, but it will take time. This year it could not be held in that 100 acre lot. And this area, which is 47 acres, there the ultimate capacity for inside marquee facility and our parking was the limitation. So we could hold it only to a certain number, and this number was dictated by the marquees available, because
we cannot order a marquee for this number. It has to be whatever marquee is available, you have to be within that. And as I said, the parking capacity was the other limitation. So we had to limit our number every day. And we know that all the members of the Jamaat were eager to avail this opportunity after 3 years of having the Jalsa, and particularly on our own location. That is why we had to restrict the number to the available capacity, and we wanted to have the maximum number of people experience this blessing. So we had some people coming on Friday, the others on Saturday, others on Sunday. We asked them to register and give their options, and we have tried to accommodate them according to their options. So there are some people, organizers, who have been given the opportunity to come all 3 days, but most of the members have 1 day for them. And the other difference was that the site could not accommodate the ladies' Jalsa at the same time. So we had to had their Jalsa Salana in Baitul Islam property. That is other limitation that we faced. And obviously, they are not happy with us, particularly when they see this mini village come up in Bradford. They are very angry that you have not given us the opportunity of attending our Jalsa Salana on our own property. But of course, they understand our limitations. So is it safe to say that we say our farewell now to International Center? Yes, by grace of Allah, now that we have experienced it here, we would never go back to International Center, inshallah. Inshallah. रिजवान साहब, जिस तरह अभी अमीर साहब ने फरमाया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जलसा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन बाज़ मजबूरियों के तहत, बाज़ पाबंदियों की वजह से हम उन सबको नहीं बुला सके। लेकिन हर रोज़ के जो हमारे मेहमान होंगे वो मुख्तलिफ होंगे, तो इस लिहाज से जो इस वसीनिटी में कम से कम रहते हैं ओंटारियो में, वो कम से कम उनको आने का यहाँ पे मौका मिलेगा। लेकिन आइंदा सालों के लिए क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि इस जगह पे, जिसका अभी ज़िक्र अमीर साहब ने भी किया है, इस जगह पे हम पूरा जलसा हमारा इस मेयार का या यहाँ पे मार्केज़ लगा के इसको कर सकेंगे? क्या ये वाली जगह जो मौजूदा है इसके लिए काफ़ी है, या हमें इसी प्रॉपर्टी पे कहीं और देखना पड़ेगा? हम खुदा के फ़ज़ल से पिछले 2 सालों से, कोविड से भी बल्कि 1 साल पहले से, जो हमारी इस प्रॉपर्टी के साउथ में जगह है 100 एकड़, जिस तरह अभी अमीर साहब ने इरशाद फरमाया, उस पे काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ फार्मर से उसके बारे में बात हुई। उनका जब मशवरा आया कि कुछ भी काम करने से पहले वीपिंग टाइल्स डालनी ज़रूरी है, क्योंकि बारिश होती है तो पानी खड़ा हो जाता है। तो पिछले साल खुदा के फजल से उसमें वीपिंग टाइल्स डाल दी गई, और फिर उनका मशवरा था कि 1 साल आपको चाहिए। तो हमारे बहुत सारे ऐसे सामीन होंगे जिसको इसका नहीं पता। अच्छा, वीपिंग टाइल्स बेसिकली जो बारिश अब होती है तो पानी खड़ा हो जाता है, तो वो ज़मीन में 4 फुट नीचे मोटे मोटे पाइप डालते हैं जिनमें सुराख होते हैं। जब बारिश होती है, बारिश उन पाइप सुराखों के ज़रिए उन पाइप में जाती है, और फिर डिस्टेंस कवर करके आगे एक पॉन्ड है जहाँ तालाब से बहुत बड़ा, तो वहाँ तक वो पानी को लेके जाते हैं। तो तकरीबन 100 एकड़ जगह है जहाँ पे उन्होंने वीपिंग टाइल्स पिछले साल डाली थी। उनको उस ज़मीन पे ठहरने के लिए, एडजस्ट होने के लिए 1 साल का अरसा दरकार होता है। तो अब वो 1 साल मुकम्मल हो गया। इत्तेफाक से कल ही उस वेंडर के साथ दोबारा मीटिंग थी, और जो कुछ हमने इस छोटी सी जगह से सीखा है उसकी वजह से हमने कुछ नक्शे भी हमें चेंज करने पड़े। स्पेशली अब MTA की ऑडियो वीडियो की ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमें बड़ा एक यूनिक किस्म का उसका सेटअप चाहिए, तो उसकी वजह से कुछ नक्शे चेंज किए हैं। कल उनके साथ दोबारा मीटिंग थी, तो उनको बताया है कि अब ये नक्शे हैं, अब आप हमें कोटेशंस दें। वेंडर इस वक्त तैयार है उस जगह को लेवल करने के लिए, फिर घास लगाने के लिए, फिर उसके अंदर वो सड़कें अभी तो बना नहीं सकते क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड है, तो वो भी एक अगला मसला है। फिर सिटी के साथ उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। वो घास लगाने के बाद उसका कहना है कि कम से कम 2 साल चाहिए आपको उस घास की रूट्स को इस्टेब्लिश होने के लिए। तो वो कहते हैं कि 2024 का जलसा आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो टीम है पूरी सेटअप की, दे आर सो मच एक्साइटेड जो कुछ उन्होंने यहाँ पे किया है। वो कहते हैं अगर इस साल घास लग जाए तो हमें आप बस मौका दे दें, हम कुछ कर लेंगे तो अगले साल इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने, जैसे आपने जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे दिल अता किए हैं, ऐसे लोग अता किए हैं जो खिलाफत के हर हुक्म पे लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं।
उमर साहब अब इख्तिताम की तरफ चलते हैं. Jazakallah to our honored guests for joining us today. To our viewers at home, stay tuned to watch some highlights of today's Jalsa, and inshallah we will coming back to you tomorrow morning at 9:30 a.m. for the live stream. Take care. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम.